We are going to start a fresh topic which is related to fluid mechanics. So let me first categorize how mechanics is categorized. It is in two parts, whether it is fluid mechanics, solid mechanics, whatever mechanics is there, it is of two parts, static and dynamics. If you are studying at rest or at equilibrium, then you can say you are dealing with the static dyne. Then if it is in motion, if we are talking about related to motion, then it comes in the dynamics category. Now if you are talking about the solid, then it will be solid static, solid dynamic. If you are talking about the fluid, then it will be fluid mechanics. So our topic is fluid mechanics. Then it is similarly, it is divided into fluid static, fluid at rest, and fluid is in motion. Then further fluid dynamics is further classified into gas dynamics, hydrodynamics, aerodynamics. Gas means it is related to gas or air. Generally in this topic or in this category we study about the compressibility of the gas at high speed air flow or gas flow. And in hydrodynamics we generally call liquids. It is related to liquids. And aerodynamics, you know, in the aeroplanes and all that, aeroplane design and all. Basically it is a aerospace related, you can say aerospace. So this is how mechanics is categorized. So first of all we should know what is fluid, how you will define a fluid, on what basis a fluid is different from solid. I mean to say how you will differentiate a fluid from a solid, on what basis you can differentiate. So this parameter is on the basis of shear stress and tangential stress you can differentiate fluid from the. So in solid mechanics you have a body, suppose this is your body, and this end is fixed and you are applying a force, tangential force here, F. So what will happen? The body will deform at a certain angle theta. This is for solid. Now what will happen in fluid? Fluid will also deform. In fluid it will get deformed again and again and again, because the shear stress or the tangential stress, or tangential stress in fluid is weak, or you can say much less than solid. फ्लूइड के अंदर जो आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस है वो बहुत ही कम होता है. दैट्स वाई फ्लूइड क्या है, कोई भी शेप ले लेता है. अगर आप फ्लूइड को एक ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर एक प्लेट भी डालेंगे तो वो प्लेट की शेप ले लेगा, बिकॉज द शियर स्ट्रेस इज मिलियन टाइम्स वीकर देन द सॉलिड. इट इज वेरी वेरी स्मॉल इन फ्लूइड. डिफॉर्मेशन आपका सॉलिड में भी हो रहा है बट अप टू अ सर्टेन लिमिट. अब आप इसके बाद इसके ऊपर कितना भी फोर्स लगाए तो ये डिफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है यहां पर, बट फ्लूइड में ऐसा नहीं होगा. फ्लूइड क्या है, वो चेंज होता चला जाएगा. टू स्ट्रेन इन fluids, stress is proportional to strain rate. This is strain rate, not the strain, because it is continuously deforming with some rate. बट इसमें क्या है कि आपका एक बार स्ट्रेन आ गया और वो वहां पर उसके बाद उसके अंदर कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा, कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, बट इसके अंदर कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता जा रहा है.
अब इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक सपोज करिए सरफेस, यू कैन से दिस इज अ सरफेस, ये एक सरफेस है एंड वी हैव टेकन ए स्मॉल एलिमेंट डी ए। स्मॉल एलिमेंट के लिए हम क्या लगा देते हैं, डी ए, दिस इज डी ए स्मॉल एलिमेंट। यहां पर ध्यान से देखना क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज अ फ्लूइड एलिमेंट एंड दिस इज द फ्लूइड सरफेस। नाउ वी आर प्लॉटिंग द नॉर्मल कंपोनेंट एंड दिस इज योर एफ एन, दिस इज द नॉर्मल कंपोनेंट नॉर्मल टू द एरिया, एंड दिस वन इज योर tangential component f e parallel to this surface, this is perpendicular and this is parallel, and what will be the resultant of this force, this is the resultant f, इसको आप f से डिनोट कर रहे हैं। so this is your tangential and this is your normal. so if you will recall from statics that stress is defined as force per unit area and is determined by dividing the force by the area upon which it acts. अगर आप स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, अभी तक आपने स्ट्रेस क्या पढ़ा है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसका अगर मैं नॉर्मल कंपोनेंट की बात करूं, इफ आई विल कंसिडर ओनली एफ एन, दिस वन divided by A, normal component divided by A is the area, so it will give you normal stress, it will give you normal stress. And if I will consider tangential part, then it will give me tangential or shear stress. So it will give you tangential or shear stress. So now again consider about the fluid. In a fluid at rest, the normal stress is called pressure. So in a fluid, normal stress is called pressure. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द प्रेशर। सो आपने एक बार और मैं आपको रिकॉल कर देता हूं, इन सॉलिड्स यू हैव स्टडीड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इन फ्लूइड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट, बिकॉज डिफॉर्मेशन जो है फ्लूइड में इट नेवर स्टॉप्स। सपोज इफ दिस इज अ प्लेट एंड दिस इज अनदर प्लेट, इफ आई विल फिक्स दिस प्लेट, और यहां पर जो आपका लिक्विड है, सपोज दिस इज योर लिक्विड, अगर आप इस प्लेट को मूव करेंगे, यहां से इसको मूव करेंगे, तो ये फ्लूइड क्या होगा, इसके साथ साथ चला जाएगा। बट सॉलिड में क्या होगा, अगर यहां पर सॉलिड बॉडी है आपकी, तो ये जब आप इसको मूव करेंगे एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही जाएगा, फिर रुक जाएगा। जैसा आपने एक बुक का एग्जांपल भी देखा था उसमें सॉलिड मैकेनिक्स में, कि आप जब बुक के ऊपर से फोर्स लगा रहे थे तो वो थोड़ा सा आगे गया था, फिर रुक गया था। तो सॉलिड क्या है, वो रेजिस्ट करता है in tangential direction, but fluid never resist, it will always move with the direction of force. So that's why we are calling it strain rate. Now stress is force upon area, normal upon area equals to normal stress, tangential upon area equals to shear stress. So now let us discuss about the arrangement of molecules, how molecules are arranged in solid, liquid and gases, why solid behave different than liquid and gases. Solid is well mannered, that's why there is no deformation by applying force up to a certain limit. So that's why intermolecular force is very high. Intermolecular force is high, इसका सबसे ज्यादा। देन फिर आपका आएगा लिक्विड
then gas. This is how intermolecular force is, or you can say the intermolecular bonds are strongest in solid and weakest in gases. This is the basic difference on the basis of the arrangement of the molecules. So ये सब तो हो गई माइक्रो लेवल की बातें, हमने देख लिया सॉलिड लिक्विड गैसेस में क्या डिफरेंस है. We have seen why solid is different from the fluid on the basis of the tangential stress. So you have to remember the shear stress or tangential stress is very low in the fluid, that's why they flow, and in solid it is very high, that's why stress is directly proportional to strain and they will deform up to a certain limit. In fluid deformation is always there, that's why we use strain rate. Stress is directly proportional to strain rate, and stress, you know, force upon area. Normal stress upon area will give you the feeling of pressure. So pressure क्या आपका, it is same as normal stress, it is always perpendicular to the surface of the molecule. This is the tangential, it will always zero in case of fluid. So this is the arrangement. Now come to our main topic. We are going to study fluid static. So first we will study fluid static, then we will move on to fluid dynamics. So in this chapter, or you can say in this topic, we will study about the variation of pressure with depth in a gravitational field, how pressure is varying with the depth in a gravitational field, and then we will study about the measurement of pressure, how we can measurement, what are the devices we can use to measure the pressure, like barometer and then manometer. So these are the pressure measurement devices. So and this is followed by a discussion of the hydrostatic forces applied on सबमर्ज बॉडीज. जो बॉडी पानी में डूबी हुई है उनके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस का डिस्कशन करेंगे, जो कि होगा आपका, आई थिंक आपके सिलेबस में प्लेन सरफेसेस हैं. देन वी विल स्टडी अबाउट सम प्रॉपर्टीज लाइक सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी. सो दिस इज द होल एजेंडा ऑफ दिस चैप्टर. So we have already defined, I think this is what is fluid static. If we will study the fluid at rest, then you will say it is fluid static. So आपने इसका एप्लीकेशन कहाँ देखा है? Suppose this is a beaker and container, we have a liquid. So this liquid is at equilibrium, or you can say at rest. So if we will study about this liquid, then it will come under the category of fluid static. Fluid at rest. अगर मोशन में होगा then it will be fluid dynamics हो जाएगा वो.